I hope all the centers are there, participants are there. Please give me one response. Hello, SSIET, Deravasi is there? Yes, sir. JCDM, Sirsa, Gitanjali Institute, Udaipur. Hello, yes. Good afternoon. MMU, Mulana, Yes, sir. okay. TIT, Bhiwani. Oh, okay. Maharaja Institute, Bhubaneswar. Is somebody there? Okay. Arya College, Jaipur. Yes, sir, we all are there. Okay. Good afternoon. So that day we worked on GIMP because we covered that day few tools. Now again we will talk about that software GIMP. I'll give summarize view how we started and how one should go. GIMP is this is a actually image manipulator software, and you can download on this address, and this is the main icon for the GIMP 2.8. That I told you 2.8 is free downloading from the net. If you will go for the higher version, you have to pay some money to the company. Then this is the image menu. This is tool. These are the tools. We covered few tools that day. I told you that day I categorized into three parts: selection tools, transform tools, and brush tools. एंड सिलेक्शन टूल में ये सारे जितने इसमें मैंने दिखाए हैं 10 के आसपास टूल्स हैं. ट्रांसफॉर्म टूल्स में भी ऑलमोस्ट उतने की हैं. एंड ब्रश टूल्स में जैसे एयर ब्रश है, ब्लेंड है, और ग्रेडियंट है, बकेट है, क्लोन, ब्लर, शार्प, डॉज, बर्न, इरेजर, पेंट ब्रश, स्मज टूल, हील टूल. सो we'll go now further. We have covered rectangular tool, ellipse tool that day. We'll start today. Pre-selection tool we already covered, and fuzzy tool we already covered that day. Now the crop tool, where it is, I'll open the software. This is the software. These are the tools. This is image tool. Okay. Now I'll open a photo. We can open any photo. Okay. Okay, say this is the photograph. Right? Because it was not in RGB,
first when I opened this photograph, computer asked me whether you want to convert it into RGB or not. These are the three methods to open this. This is a crop tool is lying here. This is the crop tool. Okay, I'll select this tool. When I am selecting this tool, that day also I explained that when we will click that particular tool, automatically tool options will open on the bottom. Say I'll open this, for example, ellipse. It will change here. Now I am going to open crop tool. In this tool, I selected this and I want to crop this portion out of the whole photograph. Right? Now you have to click inside the square, inside the selected boundary. Now this is the required area of the photograph which I want to use further. So next tool is cache transformation tool. This is very interesting tool. The cache transformation tool is lying in the toolbox. Yes. बेटा ऑडियो आ रही है ये. Okay. This is cache transformation tool. In this, what this actually work, the cache tool is a transformation tool which works like the same way as the free selection lasso tool works. Have you you please recall, yesterday we used the lasso tool. Where is that lasso tool? This is free lasso tool. Okay, here is this is the cache tool. I'll open how it will work. I'll show you first in this. See how to activate. First you have to open the photograph, image, go to the toolbox, activate the cache. Tool options will appear in the window attached under the, as I already explained to you. You are now able to draw. जब आपने फोटो ले लिया, उसको इमेज को आपने मेन उसमें ओपन कर लिया और उसके बाद में आपने जब इसको टूल को क्लिक कर लिया और उसके बाद में आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं. कैसे? जैसे मैंने ये फोटोग्राफ आई कैप्चर्ड फ्रॉम माय कैंपस, उसके ऊपर काम किया है. आप देखिए इसको कैसे मेनली केश मीन जो पिंजरा होता है, पिंजरे के अंदर जो भी इमेज आएगी उसके साथ ये प्ले करेगा. दिस इज द मेन बेसिक थिंग ऑफ दिस टूल. लाइक दिस. ओ मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. I selected whole picture, then see I distorted this picture. Can you see the difference? This is the picture now. Okay, we'll do this practical. I tilted this car, and if you see on the front, some distortion I created in this.
we'll have one example now. We'll do on this. Okay. I'll open a photograph. Okay, I'll open this photograph. Right? This is the photograph image. I'm not talking about the uh, improvement of image now, because our purpose is different. Agar if you want to improve this picture, yesterday day before I told you how to improve the picture. Can you tell me how? First we will correct the curve, that grayscale. After that, we will add the colors if required. लो, मैं बहुत जल्दी में एक बार करके रिपीट कर देता हूँ, so that you will come to know. This is the photo. I am going to improve this little bit with the curve. Okay, then again I'll go there and I'll select colors. Little red. Okay, green is not required. Little bit green is required. Then I added either yellow or opposite is blue. Right, after that I'll go to the bright and contrast. Now this is the picture. This is the, you can see the difference. Okay, we'll do the cage. I selected the cage tool, and if you notice here on the tool option cage transformation, there is a selection create or adjust the cage. This is selected one. Okay, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ इसको मैं, पहले लार्ज कर लेता हूँ, मैग्नीफाई करके थोड़ा सा. राइट, you were asking about the car. उसमें distortion you will come to know with this example. Right, if you notice automatically that selection transferred to deform the cage here. ये ऑलरेडी आप पहले कहाँ थी, पहले थी create or adjust the cage. If you want to do some alteration in this, again you have to select create or adjust, only then. Otherwise we are ready to work on this picture. Okay, I will distort this picture.
because when we are manipulating with the dots, that computer is taking a little bit time for mathematical calculations. वो जो घूमता है बीच में वो अपना कैलकुलेट करके फिर आपको जो है उसका रिजल्ट देता है. So can you see the distortion? Right? The right way is, actually I wanted to show you this, how to do this. Sorry. Again, I selected create or adjust the cage. So that again you want to do, then if I'll select here, it will go to the deform the cage like this. Okay. For this, first of all, we have to make duplicate layer of the original. Only then we have to work on that. I'm going out of this. Duplicate layer. Now this is duplicate layer. Some action has been open. This is the photograph. Duplicate layer. Now I will work on duplicate layer only. It will help to make the caricatures also. Okay. So this is the distortion. Clear? Any question in this? Okay.
This is another tool, perspective. How to create perspective. Sometimes you are having photographs that is clicked in a different angle, that is in perspective. You want to correct that photo also. So with the help of this tool, one can correct the image or photo like this. This is in perspective angle. We have to correct this like this photograph. This is our student center. You must be seeing this. Let us do this practical, how we will do. I'll open. Uh, Please, centers, if you have any question, please come with the question regarding the tools. I'm searching, where is that? Anyway, कोई और ले लेते हैं फोटो. Where is the photo? Yes, there's no photo. Okay. I'm copying this photo. Paste here. Open. Desktop पे है. What is the name? This is. Okay. This is the photo. This small photo. I'll cut it first of all. And already we use that tool, cutting tool, cropping tool. I'll crop first this photo because I required this much only. Okay, this is the photo. And first of all, how to save this photo? Go to file, and there is a export as is there. Export as JPEG. These are the formats you can save in different files. So many formats are available in this. I'll save this image in JPEG. JPEG. On the desktop, it will replace. Export. Now I'll cut this, discard this photo, open. Let's see where this goes. I think this is the
or photo. Open. Now this is the photo. So we have used that previous tool also for your summarize, and now we will do the work on this. Which is a tool? Scale, rotate, perspective. Okay, we'll use this tool, perspective. When we start this, automatically tool options are opened. Normal, corrective. This is linear, cubic, as it is. We don't want to change the parameters. Okay, and number of lines. Okay, I'll click on this. Sorry, I have not opened this photo. Let me open. What happened? You have to bear with me because my computer is a little bit slow. Have you practiced on this software centers? Yes, sir. How you like this software? Quite good. Which exercise you have done? We are doing, right now we are doing the cropping and caging. Okay. So now what we are doing? We are doing perspective. This is okay. So I selected this. These are the parameter. I am not going to change any parameter. By default, what is coming according to that I'll work this on this photograph. Okay, I'll click here. See, when I am clicking on this photograph, you can see so many lines are there. You can select lines with the like this because number of lines, how many lines you want, according to your choice you can select. Okay, now I'll change the parameters because I want to make perspective of this building like this. Can you see the how building is going to change? Okay, or cuts. Okay, so you can change the angle. Now you can see when we are changing, all the parameters are XY are changing in this. Okay, transform. So this is the perspective view of that building. Okay, if you want to use this area also, what one can do, select this first with the help of fuzzy tool.
I selected this area. I'll press on control and okay. With the, first I selected with fuzzy tool. Second I pressed the shift instead of control. Sorry, अब मैंने कंट्रोल बोला था लेकिन शिफ्ट को दबा के आपने इसको फिर क्लिक करना है. Then you can see the selection area both side of the building. Now you can fill color with the help of bucket. Which color you want to fill, it is up to you, or you can fill the okay. How to change the color? Click on this. I am selecting here say cyan blue. Okay, I'll click in this. Go to select none. Okay, so both side I filled the color of the building. If you will have any photograph or image in perspective view, you can uh, correct that photograph. Okay, because this was corrected photograph, I made the perspective on that photograph. Is it not interesting? Centers, I need your response. It is very interesting, sir. हाँ, आप इसको करके देखिए किसी फोटो को. कर रहे हैं सर. हाँ, Sir, we are doing that. okay. Next is flip tool. This is also interesting. This is flip tool. There are, because in this icon there are two surfaces shown in the icon with both side arrows. The flip tool provides the ability to flip layer or selections either horizontally or vertically. Okay. Now one can access the flip tool in different ways. Click the flip tool icon in the toolbox as we are working. Use the shift plus F key. This is shortcut. Go to the tool menu. However, over transform tools, select flip. These are the three ways you can open this tool. So how to activate now? Open a image of building, because here I have taken example of building, that is why I have written building. You can take anything, you can take tree, you can take any object. Create a duplicate layer or of the image of building. Go to toolbox and click flip tool icon. Okay, this is the after, because this is the flip tool, these are the selections. Okay, let's go and do what is going to happen. We'll do the practical on this. Open. We have to search the photo of that building. Okay,
This is the photograph. Okay, I want to scale first this photograph. Scale is another tool. With the help of this, you can change the size of the image. Here I am changing the size of the image. Scale. You can see here width and height is there. The width is 656 and the height is 414. And now this is connected with XY. Both are together now. If I'll click, now they are separate. Scale. Now this is the photograph. Now with the help of move tool, I'll move this. Okay. This is the flip tool. Here you can see the pick a layer or guide is selected. Move the active layer. We don't want to use any active layer right now because already we picked that selected area. The horizontal and vertical in the flip tool. Either you want to change vertical or horizontal, it is up to you. So for that, now because this is one picture, if you want to change the angle on that picture only, you can change. Or what you can do, go to layer. If you want to make an interesting picture, go to layer, duplicate layer. Okay, now you can work on this layer and you can move this building and you can make a one single picture. So is it clear? Can you do yourself, dear participants? Flip tool, can you do? Are you doing? If you are simultaneously working on the tools. Yes, sir. We can do. We are doing. Okay. Next. सर इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस किया था सर, तो ये काम नहीं हुआ सर इसके ऊपर। हाँ, फ्लिप टूल को कल यूज किया था सर, फ्लिप टूल को कल यूज किया था सर, पर ये ऑपरेट नहीं कर रहा। फ्लिप टूल को यूज किया था, ऑपरेट नहीं कर रहा। हाँ जी सर। चलिए दोबारा आपके सामने करते हैं, आप वैसे वैसे करते रहिए। ओके सर। आप, मैं ओपन कर रहा हूं इमेज को। ये मैंने इमेज ओपन की है। आप देखिए, अब आपको जब कोई इमेज ओपन करेंगे पूरी इमेज उसके ऊपर आएगी, राइट। आई वांट टू, अगर तो इसी को करना है, आपने एंगल चेंज करना, फ्लिप करना है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज। इफ यू वांट टू मेक सम इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ और इमेज, तो देन यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो
इसी फोटो को मैं फ्लिप करके आपको दिखाता हूं। ये आपने सिलेक्ट किया, अभी मेरे को रिस्पॉन्ड कीजिए, आपने सिलेक्ट कर लिया हाँ जी फोटो सर, इमेज? कर ओके, दी। go to this is the flip, ये can you see the cursor? this is यस the सर। this is the flip icon, click on this. ओके सर। Okay, यस सर। have you clicked? यस सर। You must be watch, there is a 2 points written here, one is horizontal and other is vertical. We will change the horizontal ओके सर। angle. Okay, ओके। and now I will click on the in the photograph or image, see what is going to happen. आप करके देखिए, कुछ हुआ? यस सर। बेटा पेन दे दो। एंगल चेंज हो गया? यस सर। So now you are able to do? यस सर। चलें अब नेक्स्ट आगे चलें। आर यू सेटिस्फाइड? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं। Okay. Next is we will do shear. Okay. This is shear tool. ये रोटेट नहीं करता, ये एंगल को चेंज करता है। Open desktop. Let me see, where is the picture? Okay, I'll select this picture for this. This is the picture. Okay. This is the shear icon. If you go work, see in that toolbox. Can you see this? Okay. This is normal, corrective. Now I'm not going to change any parameters. By default, what is available, I'll use those and click on in this picture. Okay. Like this it will come. Now, but you can change X, Y. See. See, this is not rotating. Yes, please. सर अगर फ्लिप इमेज को कहीं दूसरी लोकेशन पे अगर सर सेव करना चाहेंगे तो? फ्लिप इमेज को दूसरी लोकेशन पे कहाँ करना चाहते हैं आप बताइए? सर मीन्स कि अगर हमने किसी इमेज को फ्लिप कर दिया उसको सेव करना है किसी, हाँ जी जी, सेव करना है। आपको मैंने पहले एक एक्सरसाइज अभी करके बताई थी, मैंने आपके लिए ही, क्योंकि मेरे को तो मालूम, तो मैंने पर्पसली वो किया था। एनीवे, आपने क्या कर, आपके सामने वो इमेज है, आप सेव इसमें जाएंगे, आप फाइल में जाइए, प्रेस द फाइल, हेलो, हाँ, प्रेस द फाइल, प्लीज हाँ रिस्पॉन्ड करते रहिए मेरे को, तभी पता लगेगा आपको समझ आ रहा है। इसमें आप देखिए एक्सपोर्ट एज लिखा हुआ है। हाँ सर, है ना? आप एक्सपोर्ट एज कीजिएगा, ठीक है, और नीचे जेपैग आ जाएगा।
जेपीजी बोलते हैं, हम जेपेग बोलते हैं, जेपीजी बोलते हैं, जो भी, उसमें आप कीजिएगा इसको। अगर आप जिम्प में, अगर आप उसमें जिम्प या गिम्प में करेंगे, जो भी है GIMP, लेकिन उसके अंदर वो सिर्फ जब अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर होगा तभी खुलेगा, अदरवाइज जेपीजी में करेंगे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर। इसमें हमने क्या किया है, फोटो को लोड किया है और हमने शेयर जो इसका यहाँ आइकॉन बना हुआ है उसको क्लिक किया है। हमने कोई पैरामीटर्स नहीं हमने चेंज किए इसमें। बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स हैं, वी आर यूटिलाइजिंग दोज पैरामीटर्स एंड वी हैव चेंज द एक्स जो इसका जो शेयर मैग्नीट्यूड है वो एक्स मैंने अभी चेंज किया। देखिए अभी मैं इसको वापस ला रहा हूं। ठीक है, मैं एक्स मैग्नीट्यूड, इसका जो एक्स मैग्नीट्यूड है उसी को चेंज कर रहा हूं। और वाई मैक्सिमम अगर आप करेंगे, देखिए वाई में इतनी जल्दी इसको, ओके, दिस इज अ शेयर। अब ये कैलकुलेट कर रहा है। ओके, now this is the picture I got, because that is whatever within the my specified area, within that image is coming. I specified that area, in that only that image is coming. I manipulated that image. The few part of that image I captured. Now again you can change this. So this was share. Okay. Now the another thing is, that is the gradient tool. The gradient जो टूल है, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, इसको समझना होगा। अगेन जो ग्रे स्केल है, ब्लैक टू वाइट हम जिसे कहते हैं, उसी में ब्लू टू ब्लैक, रेड टू ब्लैक, इंस्टेड ऑफ वाइट, दैट ब्लू I am donating that word, that shade blue. It's mean white, black, blue, black, red, black, yellow, black, green, black, like this. In between, so many shades are coming. Gradual shades, gradual shades. ग्रे में आती है ना, इसी तरह से इसमें है। So I clicked on this, you can see here, ये दिखाइए, हाँ ये इसमें you can see this is the gray, black to white is there. If I'll click on this, the different shades will come up. These are the, ये सारी जो ग्रेजुअल शेड्स हैं, ग्रेडेशंस हैं, वो है। अब मैं इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब then I have to select the area, in which area you want to fill. This is very important, and here I'll take help of fuzzy tool, fuzzy selection, or you can say we are in the software that Photoshop, we are calling this magic wand tool. Here we are calling this, in this tool, fuzzy select tool, जादू की छड़ी। This is not selected. Okay. I selected both the part by taking help of shift. I press the shift and select with the help of fuzzy tool, and now I am selecting
gradient tool. See, excuse me, आप थोड़ा ध्यान इधर दे दीजिए, फिर आप पूछेंगे फिर पता नहीं लगेगा। ये देखिए, इसको पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में अब जिस एंगल से हम इसको चलाएंगे उसी तरह से उसके शेड चेंज होगा। देखिए, मैं एक में मैं आपको ऊपर से नीचे मैं ये लाया और इसमें ये फिल हो गया। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट लाता हूं, ये एंगल चेंज हो गया। Let's have, because I think instead of this picture in between, we should have plain screen. Okay, I'll open plain screen, new. I selected this size should be, let me have 40 by 480. Okay, this is the size I'm selecting, so that now you will come more clearly. So I was showing you this angle and left to right. Okay, not only this much you can do with the help of this tool. If there is a shape linear, so many linear different shapes are also available. So if I'll select the radial shape, and with the help of this tool you can see the round shape is more visible, with because colors are playing with the shapes also. Whatever donated shade is there, shape is there, following that shape, wrapping on that. See, okay, these are different. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। Now another is bucket tool. This is bucket tool. bucket में क्या है, कलर, उसमें ग्रेडेशन नहीं है, उसमें टोटली यू कैन से कि ओपेक जैसे कलर होते हैं, ओपेक तो ये भी हैं, ग्रेडेशन इज आल्सो ओपेक, बट फ्लैट कलर्स you can fill, and for that you have to select any color, click on this, select the color. Okay, whatever selected on the foreground, because here we selected the foreground. Okay, it will fill this color. Okay, if we'll select the background color, you see this is the background color, and it will select white, because in the background color white is selected here. Okay, in the background color white is selected here, if on the foreground, and this is the red. And another thing is also available in this. This is pattern fill. If we'll click in this, so many pattern will appear. Say this is bricks pattern, you can see. This is another pattern. Oh, okay. I have to remove first this, because why this bucket has not filled again on this? This is question. Participants, please दूसरे सेंटर में से मेरे को बताइएगा, मैंने अभी एक गलती की थी, वो क्या गलती की है। मैं इसको फिल कर रहा हूं और ये देखिए, ये मैं ब्लू कलर इसमें फिल कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, क्या गलती की है, लेट मी नो प्लीज, बताइए सेंटर्स। देखिए, हाँ जी बताइए क्या गलती की मैंने, अभी मैं बकेट से इसमें फिल कर रहा हूं, ये क्यों नहीं हो रहा फिल।
एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज ओके। अगर मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, एरिया तो ऑलरेडी पूरा सिलेक्टेड है, पूरा कैनवस मैंने लिया है, इसमें एरिया थोड़ा सोचिए। ओके, मैंने आपको बोला था ग्रेडियंट टूल जो था वो ग्रेडेशन देता है, ये फ्लैट टूल होता है। अब इसमें क्या है कि जिस भी जगह पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये ऑलरेडी एक एक ब्रिक के अंदर ग्रेडियंट है। तो इसने क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर जो उसी इंटेंसिटी का कलर होगा उसको पकड़ के इसने उतने एरिया में किया। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये एरिया देखिए जहां मैं घुमा रहा हूं, यहां हल्का सा ब्लू आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम न्यू, ये एरिया है। अब इसमें अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये वाली स्क्रीन जो है हमने जिसको सिलेक्ट किया हुआ है वो आ गया है, बिकॉज दिस इज सिलेक्टेड। ओके, अगर मैं इसको फोरग्राउंड कलर में सिलेक्ट करता हूं तो तब ये आ जाएगा, राइट। तो गलती वहां थी कि जो स्क्रीन को मैंने सिलेक्ट करके उसमें क्लिक कर दिया, क्योंकि उसमें ग्रेडेशन होती है। जो आपको मैंने कल भी बताया था, कोई भी पिक्चर बनती है वो डॉट 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 करके बनती है बीच में। तो दिस इज फ्लैट कलर। हाँ, किसमें? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, ये जो कलर है ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इसके लिए है, इसके लिए है। लेकिन ये तो आपका पैटर्न है, वैसे इस्तेमाल करना है अगर आपने, उसके लिए डिफरेंट पैटर्न्स हैं। जैसे अब ये देखिए, इसमें ये एक ही ग्राउंड है। आप समझे नहीं, जो फोरग्राउंड लिखा है और बैकग्राउंड है, इसका मतलब ये है कि दो कलर्स आपको अवेलेबल हैं। एक बैकग्राउंड में है, मान लो बैकग्राउंड में मैंने ये यूज किया, ठीक है। फोरग्राउंड मैंने इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं किसी भी, ये क्योंकि यहां पर व्हाइट है, चलो अब मैंने इसको बैकग्राउंड कलर बना दिया है। अब ये फोरग्राउंड कलर ये वाला है, व्हाइट, राइट। और अगर आपको ऐसे समझ आएगा कि अगर मैं कोई शेप ले लेता हूं, ये शेप ले ली है और शेप में मैं इसको फिल कर रहा हूं। बैकग्राउंड कलर मेरे पास है ऑरेंज है, और फोरग्राउंड कलर मैं अब इसमें व्हाइट फिल कर रहा हूं। क्लियर? पैटर्न में नहीं, पैटर्न में तो सिंपल आपको एक ग्राउंड मिल रही है ना। हाँ, वो तो जैसे आपका एक बैकग्राउंड है उसके ऊपर कुछ भी ला सकते हैं। जब मैं बैठा हुआ मेरे पीछे से बैकग्राउंड चेंज कर दो, सेम चीज वही है। बट उसमें क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट का आउटर सिलेक्शन जो है होनी चाहिए। यस, क्योंकि अगर मैं बैठा हुआ हूं, पीछे मेरे वो दिखाई दे रहा है जो पोर्शन, उसमें क्या है कि आपको चाहिए कि मेरी सिलेक्शन ये पूरी जितनी विजिबल है बॉडी उतनी सिलेक्शन करके उसको इन्वर्ट कर दीजिए। इन्वर्ट करने से क्या होगा, सिलेक्शन पहले आपने मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर की, और इन्वर्ट करने से उसका आउटर पार्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर यू कैन मैनिपुलेट, राइट। एनी क्वेश्चन सेंटर्स? कोई बात नहीं, नहीं है सेंटर्स के पास क्वेश्चंस? ओके, so friends, these were few tools today we covered.